Good evening, sir. Good evening. Good evening. My screen is visible. Yes, sir. Great. I think brightness is low. Yes. So let's start our terminal. Uh, okay, so what we can do? Okay, so let's start the terminal here. Uh, so in back end, we have to start npm run server, and in front end, we have to start to cd front end, and now npm start. Yes. So it is connected to your MongoDB, and yes, your front end application is also started now. So yeah, so we have the corresponding dashboard which we are going to open here. And yes, so let me refresh the page. And what is the problem? Yes, undefined is not a validation. I don't think. क्या कोई एपीआई फट रही है तुम्हारी? Let me check. Okay, so we can use this console. Here we have the appropriate data. So I'm going inside my guest dashboard. So yes, this is your guest dashboard. We have already a list of cards. So I think, yes, when you add the quantity, then yes, you have the list of item in your cart. So firstly, what we are going to do, we are going to take the shipping address. If the shipping address is already inside your application, then we will move it inside the payment gateway part. So in this week, we are going to cover the shipping things and the payment gateway. So we are going to handle a credit card, debit card, or PayPal accounts, as well as phone pay, UPI, or a Google Pay, or a Paytm UPI, any kind of UPI. We are going to handle it. So this is most important or most crucial part of this application, where you have to handle with the security things like payment stuffs.
Okay, so what we can do, I'm going to give one button here where we have the checkout, and now on the checkout button, uh, it is going to redirect you on your shipping address part. So user can easily add their shipping details. Okay, and if the shipping address is already inside the application, then we are going to disable this button, or like we can use a new address button for this. So in shipping, we have a name, we have an address, we have already made the backend stuff where we have the name, address, email, mobile, landmark, and pin code. Nice. So let me check our postman. And I'm going to start my MongoDB database as well. So you can look into it. Yes. Yes. Dismiss it. And we have a request, but probably let me check our MongoDB first. And basically for deployment, I think if we have a bandwidth, then I'm going to use, or I'm going to uh, give a little bit introduction of AWS, which is Amazon Web Services, where you can handle your deployment stuff. So if we have a bandwidth, then we are going to handle AWS, or we are going to use AWS. Otherwise, we are going to deploy the application or on Heroku or a Firebase. Uh, it totally depends on, because for deployment it takes little bit time because it is a dynamic website. So the problem is that in your course there's no deployment steps. So basically I have a strict uh, information from your e-kida team, like we have to complete it before August end. So we have a lot of things which we have to cover. So problem is that in your catalog we haven't any deployment things. So let me check how can we do that, because it takes almost 3 to 4 uh, 4 lectures to complete the AWS deployment stuff, because we have a cloud functions to manage. We have to uh, pipeline setup, which set up the pipeline. There are a lot of stuff. आप क्या कर सकते हो कि आप GitHub के साथ भी पाइपलाइन डिप्लॉय कर सकते हो. इससे क्या होगा कि आप यहाँ से GitHub पे कोड पुश करोगे और ऑटोमेटिकली वो डिप्लॉय हो जाएगा तुम्हारे तुम्हारे स्ट्रक्चर पे, आई मीन तुम्हारे CDN लिंक, तुम्हारे लिंक पे. तो बहुत सारी चीजें हैं. अगर इतना बैंडविड्थ, आई थिंक वी हैव too much bandwidth, but yes, I will try जितना कर सकते हैं. Yes, so I'm going inside my browse collections, and now inside your browse collections we have a shipping details. Yes, we have already done that. So Hello? I have an entry of, yes. सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट ई Yeah. कीड़ा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो रही है इस समय. सर मेरी आईडी ब्लॉक कर दी गई है, मेरे को ग्रुप से भी रिमूव कर दिया गया है. I अभी हम don't know. कॉल ट्राई कर रहे हैं, इतनी देर से कॉल ट्राई कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन टीम से कोई भी कॉल नहीं रिसीव कर रहा है. I'm sorry for that, but I have no information regarding that. प्रणय से बात करो. प्रणय maybe helps you. सर कुछ कांटेक्ट नंबर हो तो प्लीज आप एक बार ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि ग्रुप पे हमें नहीं मिल रहा है. Okay, I will try to share it. Yeah.
ठीक है, सॉरी फॉर मेरे को इंटरप्शन पिंग सर. करो. ओके ओके, गिव मी अ सेकंड यार. या so now we are going to handle the front end stuff because we have already done the back end thing inside our application. So what we can do, we have the what add to cart page where we have a different items, and then after this typography I can do one thing. I can import, I can use a button here. So this button is basically uh, add your details. Okay, yes, add your shipping details. So button is not defined, so I have to import this button from the MUI. So yes, we have imported it, and now everything is okay. So yes, so we have a button, but we have to give some style here. So this button have something called variant, and this variant should be contained. Let me quick fix. And yes, but yes, because we have this button, but I'm going to give some SX property. So margin top should be 20 pixel. Quick fix. Yes. And I'm going to give margin. I'm going to give margin. Yes. So yeah, you have this button, add your shipping details. So it redirects you on the shipping page. So how can we do that? So I'm going to make another page, which is shipping details.js. And this is RFC shortcut. So yes, you have H1. Hello, this is shipping detail page. It's done. Okay. Yes. Okay, nice. Now what you have to do, you have to import it in what, which file? बताओ कहाँ ऐड करना होगा इसको? अब तो बता दो. app.js के अंदर करना पड़ेगा ना? So I'm going to make another route. Just copy this. And yes, we have done. And now I can add, import shipping details from pages. Shipping details. And yes, and now you have to change this route to shipping detail. And now what I can do, I can simply do shipping details dot user ID. अब किसकी shipping details है वो भी तो रखना पड़ेगा ना भाई, तो हमने user ID डाल दिया. Okay, so let me check this their backend stuff inside your route.
शिपिंग राउट, और हमने यहाँ पे टोकन नहीं रखा है, आई मीन टोकन हमने नहीं रखा है, आई मीन हमने ऑथोराइज नहीं करा है इसको. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन डू यस, ठीक है, इसको प्रोटेक्टेड बना देंगे बाद में, क्योंकि शिपिंग डिटेल तो एक पर्टिकुलर यूजर का होगा ना, तो हम सारे का शिपिंग डिटेल थोड़ी रख देंगे एरे के अंदर, हम उस पर्टिकुलर यूजर की कोरस्पॉन्डिंग शिपिंग डिटेल्स रखेंगे, है ना. समझ पा रहे हो सब मेरी बात को? यस. So what I can do now, I have to make like on add to cart, I'm going to give a event handler which is on click, and this on click have handle push button, sorry, handle push function. So I'm going to define this handle function here. Const handle push is equals to, and this is what you can simply use React Router DOM and use navigate. So we have no React Router DOM here. है. Use params है, और use params है, मैं यहाँ पे use navigate लाता हूँ इसमें से, React Router DOM में से, और इसको कॉल कर देता हूँ. तो const navigate is equals to what? Use navigate. Nice. So what you have to do, you have to simply navigate this user to what? This shipping details slash user ID, and user ID. How can we receive this user ID? Have you any reducer for that? No. So let me check the add to cart. But ये product की ID है. ये किसकी ID है? Product की ID है. ओके, तो प्रोडक्ट की आईडी है, और हमने उसको प्राइवेट राउट बना रखा है. अच्छी बात है. तो हमारे पास तो उसकी यूजर की आईडी तो नहीं है. तो लेट मी डू समथिंग. सो आई एम गोइंग टू गेट दिस यूजर डिटेल्स फ्रॉम द यूजर लॉगिन रिड्यूसर. सो कॉस्ट यूजर डेटा is equals to what? Use selector, and yes, you have a state, and yes, what you can do, आपने state लिया, और state dot user login reducer dot क्या होगा देख लेते हैं स्टोर में, मुझे भी याद नहीं है. तो यूजर लॉगिन रिड्यूसर डॉट, अगर मैं इसके अंदर जाऊं यूजर लॉगिन रिड्यूसर में, हाँ, तो हमारा लॉगिन इन्फो है. तो लेट मी चेक. यस, ऐड टू कार्ट. मैं यहाँ क्यों यूज कर रहा हूँ इसको, लॉगिन इन्फो, ठीक है. हाँ, हमें तो यूजर डेटा ही चाहिए. तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से मैं जो हैंडल पुश है, यहाँ से मैं दे दूंगा इन डायनामिकली. यस, तो इन डायनामिक, लाइक अगर हमें डायनामिक वैल्यूज भेजनी होती है तो हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग व्हाट, दिस, ठीक है, एंड इनसाइड इट डॉलर. अब क्या है हमारे पास, बताओ कहाँ से गेट कर रहे हो डेटा, यूजर डेटा से. तो व्हाट यू कैन डू हियर, यूजर डेटा डॉट टोकन, and that's it.
You will easily navigate the user on this URL. So let me refresh this page. And now I'm going to add a shipping details. Okay. Okay, मैं तो token भेज दिया ना. No, I have to send it shipping details. Okay, shipping details. टोकन नहीं था ना, क्या था, यूजर आईडी था ना, अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर आईडी थी, यूजर की आईडी. तो अब देखते हैं. Yes, easily navigate on this URL where you have a shipping details slash what the user ID, and this is your what, a page. Does it make sense, guys? ये तो कितनी बार लिए हैं हम, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? ठीक है. अब हमने देखो, अभी हमारे पेज, हमारी एप्लीकेशन में ना कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए नहीं आ रही है ना कि हमने रिडक्स यूज करा हुआ है. अगर रिडक्स यूज नहीं कर रहे होते ना, तो तुम्हारा जीना हराम हो गया होता प्रोडक्ट के अंदर. वाई? तुम्हें डेटा ट्रांसफर करने में, कॉल बैक बनाने में, एक जगह से दूसरी जगह 10-10 प्रॉम्प्ट्स पास कर रहे होते. बट अब क्या होता है कि हमें कोई भी डेटा चाहिए होता है, हम सीधे रिडक्स से क्या करते हैं, डेटा गेट कर लेते हैं अपने कंपोनेंट पे. एक्चुअली रिएक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी तभी आती है जब आप प्रॉब्लम क्या होता है कि आप डेटा को हैंडल नहीं करते हो सही तरीके से. अगर आपने डेटा हैंडल कर लिया तो आप बहुत इजीली सारी चीजें मैनेज कर लोगे. बिकॉज क्योंकि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट वाइज हियरार्की होती है, तो कंपोनेंट वाइज हियरार्की के अंदर व्हाट इट मींस कि आपको कभी भी अपने डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पहुंचाना होगा, बिकॉज ऑफ उस स्टेट को पहुंचाना होगा. तो उसके लिए हमारे पास क्या है, रिडक्स है जो कि हैंडल कर रहा है. एंड दैट्स व्हाई वी आर वेरी easily manage a lot of things inside the project. ठीक है. सो अब हम add to cart पे पहुंच गए, और now inside the add to cart, yes, so ठीक है, हेडर है, ठीक है. तो मैं शिपिंग डिटेल्स में आता हूं, और मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इंपोर्ट कर लेता हूं हेडर को. इंपोर्ट हेडर फ्रॉम, and it is inside the components header. ठीक है. And now what you can do, you can simply use this, this header component, and yes, it's sorted now. Let me check. Yes, you have the header component. ठीक है, हेडर आपने इंपोर्ट कर लिया. अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि फॉर्म को हैंडल करना है. सो आई एम गोइंग टू हैंडल द फॉर्म हियर. सो what I can do, I can simply make a form tag, and inside this form tag we have a form control, and yes, you have what, the form control के अंदर क्या यूज करोगे, input. और आप इनपुट यूज कर लो या टेक्स्ट फीड यूज कर लो. मैं टेक्स्ट फीड यूज कर लेता हूँ. टेक्स्ट फीड, ये सारे MUI के कंपोनेंट्स हैं. टेक्स्ट फीड. मुझे ये फॉर्म कंट्रोल यूज करना पड़ेगा. इंपोर्ट फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट फीड फ्रॉम @MUI/material. क्या प्रॉब्लम है? ठीक है. सो टेक्स्ट फील्ड की पहले, अच्छा मैं ना कोई फॉर्म उठा ही लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये
साइन अप पेज है ना, देखो। हम्म, ये उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं, है ना? उठा तो सकते ही है ना? कोई दिक्कत है किसी को? बताओ। कोई दिक्कत नहीं होगा ना? सर। अ, हमने कार्ड बनाया, और कार्ड कंटेंट, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट फील्ड, फॉर्म कंट्रोल हमने यूज करा हुआ है। सो साइन अप पेज में जाते हैं और इसके इंपोर्ट्स को उठा लेते हैं। तो एक तो ये इंपोर्ट है, एक ये इंपोर्ट है। थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट फील्ड को हटा देता हूँ। भाई 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 भाई। तो मैं ये वाला हटा देता हूँ, नेविगेट वाला भी हटा देता हूँ। आई थिंक ठीक है, चेंज आया नहीं होगा। हाँ ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये ऑन चेंज हटा देता हूँ। ये सेलेक्ट का काम हमारे पास नहीं है, तो मैं सेलेक्ट भी हटा देता हूँ। स्टाइल बॉक्स है ना, ये बॉक्स भी हटा देता हूँ। हम क्लिक पे हमने हैंडल सबमिट कॉल कर रखा है, मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर नहीं, हटा ही देता हूँ। ठीक है, एंड दैट्स इट। ठीक है, and yes, everything is now perfect. Oh wow, but yes, what we are going to do, we are going to change it according to our controller. So inside my controllers, give me a second, guys. Yes. So we have a name, address, email, mobile, landmark, or pin code. So what I can do, my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Address, and now enter your name, सही है, enter your email, सही है, enter your address.
एड्रेस और एक और फॉर्म कंट्रोल ले लेते हैं। इसके अंदर क्या डालना है बताओ? मोबाइल नंबर, लैंडमार्क और पिन कोड। मोबाइल इंटरव्यू, मोबाइल नंबर, इंटरव्यू मोबाइल नंबर, इंटरव्यू व्हाट, लैंडमार्क, लैंडमार्क और फिर क्या है? इंटरव्यू पिन कोड। पिन कोड, यस। नेम हो गया, ईमेल हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, लैंडमार्क हो गया, पिन कोड हो गया। सेव। सेव। अब मैं क्या करूंगा कि मैं क्या करता हूँ कि what I can do, what I can do, I can just give। मैं एक शिपिंग एड्रेस को ग्रिड 12 हाफ दे देता हूँ, और हाफ में मैं क्या करूंगा कि जो भी एड्रेस सेव होगा वो एड्रेस तुम्हें यहाँ पे ऑलरेडी दिखेगा। इज इट मेक सेंस? यस, इट मेक सेंस। तो फॉर दिस व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन डू, अब देखो इसमें बात क्या है, मेरी प्रॉब्लम को समझना और मेरे को सॉल्यूशन बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, मान लो कि कोई यूजर 2-3 शिपिंग एड्रेस रखता है, रख सकता है ना, तो वो कौन से डेटा टाइप में स्टोर करेगा बताओ? कोई तो बताओ। वो एरे में रखेगा ना। जैसे अगर तुम्हारे ये प्रोडक्ट्स है तो सारे प्रोडक्ट्स किस में है? एक एरे में है। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना। अब मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं बैकएंड से, तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट कंट्रोलर पे जाता हूँ, गेट ऑल प्रोडक्ट पे अगर तुम देखोगे तो गेट प्रोडक्ट्स में तो हमें सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, है ना। तो आई वांट व्हाट कि जो हमारी शिपिंग एड्रेस हो, वो शिपिंग एड्रेस हमें उस यूजर की जितनी शिपिंग एड्रेस होगी वो हमें चाहिए। तो हम उस शिपिंग एड्रेस को क्या करेंगे, इसके साइड में शो कर देंगे। इसके साइड में हम क्या करेंगे, शो कर देंगे जितनी भी शिपिंग एड्रेस, क्योंकि मल्टीपल शिपिंग एड्रेस हो सकती है ना। आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली गिव हियर ग्रिड, ग्रिड, grid container. Now I can use this after this form. Yes. And here we have to import this grid. Okay. And now you can do one thing, grid item, और इस आइटम को हम इस फॉर्म के बाद तक रखोगे, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि ग्रिड आइटम में मैं एसएम में दे दूंगा इसको 12, और एमडी में दे दूंगा मैं इसको कितना, 6। वो 6 दे देते हैं, इसको 9 दे देते हैं। बट 9 तो दे दिया, बट मुझे जो हमारे पास स्टाइल डीव है
स्टाइल डीप के अंदर एक प्रॉपर्टी देनी होगी मुझे एसेट्स की। अगर मैं एसेट्स देखता हूँ, लेट मी चेक, तो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और ये जो 9 इसको मिली है, अगर मैं इसको वेट दे दूँ 100%, डज इट मेक सेंस? नहीं, कोई काम का नहीं है। अगर मैं इसको दे दूं वेट 100%, यस, इट लुक्स लिटिल बिट गुड। तो ये कौन सा है? साइड कार्ड है। लेट मी चेक एसेट्स। अगर मैं इसको वेट दे दूं, सर उसको 60-40 कर देते ना, विथ 60 और उस जो साइड में कंटेंट दिखाना उसके लिए 40% छोड़ देते जगह। मैं इसको 8 कर देता हूँ ना। अब नहीं चलेगा? बताओ। हाँ चलेगा, अभी ठीक है। अब इधर हमारे सारे कंटेंट आ जाएंगे, इधर शिपिंग एड्रेस हो जाएंगे, है ना? इट लुक्स लिटिल बिट गुड। या गिव मी अ सेकंड प्लीज यार। यस। हाँ, तो what I yes, am I audible? यस सर। Yes, sir. Okay.
So yes, we have this shipping details form, and then what we have the list of these details which we are going to render on that part. So firstly, what we have to do, we have to handle the shipping details form. So for this, what we can do, we are going to make actions which handles the shipping details. So first we have to, what we have to define, we have to define the constants. So I'm going to make another file here, which is what? Shipping constants.js. And inside the shipping constant, because it is an API request, so I can do what? Yes. So because it is an API request, so you have to handle the started, you have to handle the success and the failure, all of the things. Because it may be, or it may happens like your API is going to be failed, or your API is going to be not going to give any data. So you are going to handle the failure condition, started, and success. If it is a normal JavaScript function, then you are only going to handle what? A single constant. So yes, I'm going to remove it. Shipping details started. Shipping details success, and what? Shipping details failure. So this is shipping details started. This is success, and this is failure. I hope you guys are very much comfortable with Redux stuff, right? Yeah. And if you know the Redux stuff, then like it is the most complicated topic in the React. So if you are good in Redux stuff, then it is great for you guys. Like, okay. So your constant is ready now. And now what you have to define? The action. So I'm going to make another file which is shipping actions.js. And now inside this action, what I can do, because we have to save this address detail, so I'm going to use this. So yes. So yep. So yes. And now what you have to do, you have to import. I'm going to explain these things, like what is inside here. So you have what? A constant, shipping constant. So this is shipping details started. And yes, this is started. And this is shipping details success. SU success. And what? Shipping details failure. And it is imported from what? It is imported from the, sorry, from the constants, and then shipping constants. Yes, it is done now. And what you can do, you have to only change this. एक बार तुमने Redux का boilerplate रेडी कर लिया ना, ये बहुत इजी होता है यूज करना, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है. For every request you can make simple. Yes. So in the actions, what we are going to do, we are firstly import all the actions, all the required actions of the shipping. So we can use this inside the action file. So here we are going to change this name to save shipping details. And now inside the shipping details, what you are going to use. So So let's understand what we are going to do. So when the user comes on the shipping address page and they fill their form, so what you have to do, you have to save this data because this data is for the particular user. So you have to save the user ID as well. अगर ये शिपिंग एड्रेस सबका सेम थोड़ी होगा सारे यूजर का,
So for every user, the shipping details are different. So what you are going to do, you are going to take this data, the name, email, address, mobile number, landmark, and pin code. And with this required data, you have to send what the user ID of that user. So in the database, on that particular user, this shipping address is going to be saved. Does it make sense? यस सर. Yes, sir. सर Yeah. ग्रुप में किसी ने मैसेज डाला है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. Okay. Who is this man? Wow. Okay. So yeah. So yes. So this action takes the user ID, the token, and the shipping details, and then it dispatches the corresponding actions. So what is the power of Redux Thunk is that you can dispatch a multiple action with the required payload in this single action creator. So this is a simply about action creator, which returns what? Which returns uh, action with the required payload. So when you dispatch the save shipping details from the component, then the first dispatch is what shipping details started. So on the basis of this action, your reducer is going to be update. So when this action should be dispatched, then what it going to be do? It is going to update your loading state. So initially the loading state should be false, and when it is dispatched from this action creator, then loading state should be what? True. And then after you are going to set the config, and inside the config you have a header, and inside the header you have a accept, content type, and authorization key. So for the private APIs, you have to pass this authorization key. But here your API is what? Is public. But in future we are going to make it private, because we want the particular token of that user. So on the basis of this token, you are going to save this detail inside your database. If you are providing the wrong authorization key, then we are not going to save this data inside the database. Does it make sense? यस सर. Yes, sir. Cool. So then after the configuration of your header, you are going to make a request, axios.post request, because post request is what? You are going to save this data. So if you have to save the data, you have to make a post request. If you have to get the data, you have to make a get request. Or if you have to make you have to edit any details, then you have to make a put or patch request. So here it is a post request because you are going to save this data inside the database. Only the thing which is changed, the API endpoint. So firstly, I have to import this Axios from the Axios library. So import Axios from Axios itself. Nice. So yes, you have ready. You are yes. Only you have to change the API route. So I'm going inside my backend folder, and inside the routes we have a shipping routes. And before this address, if you are going inside the app.js of the backend, then you have API/shipping, API/shipping, and then what? बताओ क्या है उसके बाद? API/shipping address. Okay, nice. So I'm going to change it inside my actions. So API, तो मैं ये चेंज कर देता हूँ API / shipping and / what? Address. Okay, so one more thing, because this shipping details is for the particular user. So I'm going to change, or I'm going to modify your API, because what we want, on the basis of that user ID, the address is saved inside your database. Okay, so yes, let me check with this detail.
then we are going to modify it according to our need. Nice. So yes, and then you have a payload, and then yes, you have the errors, which you have already handled. And yeah, I'm going to remove it. And here we, अभी authorization की कोई requirement है नहीं, तो मैं इसको comment कर देता हूँ. टोकन भी हमें नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हमने ऑथोराइज नहीं कराया. बहुत सही, बढ़िया. So yes, your action is ready now. Only the thing which you have to handle is their details. So, तो अब मैं जाता हूँ अपने फ्रंट एंड के अंदर, और जैसे हमने अपने साइन अप पे अपने हैंडल करा था, जैसे हमने अपने हैंडल चेंज को हैंडल करा हुआ था, नेम और वैल्यू निकाला, फिर हमने प्रीवियस स्टेट में अपने नेम और वैल्यू डाला, फिर हमने सबमिट करा था. यही करते हैं ना जब हमें कोई भी एपीआई कॉल करनी होती है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक अ स्टेट हियर इनसाइड अ शिपिंग डिटेल. सो फॉर, देखो कभी भी किसी कंपोनेंट के डेटा को सेव करने के लिए हमें कंपोनेंट पे स्टेट हैंडल करनी होती है, एंड फॉर द हैंडलिंग ऑफ द स्टेट यू हैव व्हाट, अ यूज स्टेट. सो यू आर गोइंग टू इंपोर्ट दिस यूज स्टेट फ्रॉम hook, and now what you are going to do, this is a user state, and yes, you have to make a state here with the help of user state. So what you are going to name it, shipping details, and the function is what, set shipping details, and this is a user state. And inside this user state, you are going to make an object with the required keys. And what are the keys? Then keys are, first is name. So name should be empty string. Yes. Then you have an email. Email is also empty string. Nice. Then you have an address. So address is also an empty string. Cool. बढ़िया. Then you have a what? After the address, you have a mobile number and a landmark and a pin code. So mobile should also be an empty string. Then you have a landmark. It is also be an empty string. Then you have a pin code, and this pin code should be string as well. So let me fix this. Okay, nice. And yes, you have some ESLint issues, which is shipping details is assigned, a value is never used, and set shipping details is assigned, a value is never used. So what I can do here, I'm going to make a handle change function which triggers from all the text field. So for handling the change, you have a one event handler which is called onChange. Right? Does it make sense now? So यहाँ पे हम क्या करेंगे कि handle change को call कर देंगे. Handle change. Similarly, I'm going to copy it. और बहुत लोग ना जो अनएक्सपीरियंस होते हैं या बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, वो क्या करते हैं, हर ऑन चेंज पे एक सिंगल अलग अलग फंक्शन को कॉल करते हैं, एंड इट इज वेरी बैड प्रैक्टिस. For the optimization, it takes a lot of it actually increases your bundle size, which reduces the quality of the code or optimization as well. So you have one basically extension on the Chrome which is called a lighthouse, so you can test the performance of your application. So अगर आप unusual state बनाते चलोगे तो क्या होता है कि वो बंडल में बहुत ज्यादा साइज लेने लगता है. जब वो बंडल बहुत बड़ा बंडल बन जाता है तो वो क्या करता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस को काफी रिड्यूस कर देता है, तुम्हारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को. सो फॉर दिस रीजन उसकी परसेंटेज काफी कम हो जाती है. अप्रोक्सीमेटली एक आइडियल सिचुएशन में तुम्हारी परफॉर्मेंस 80% से ऊपर होनी चाहिए एप्लीकेशन की, बट जब आप बहुत सारे स्टेट्स बना दोगे तो वहां पे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस 30-35% चली जाती है. इवन मैंने ऐसे ऐसे कोड देखा है कि जहाँ पे परफॉर्मेंस 10% होती है एप्लीकेशन की. तो आइडियली एज ए डेवलपर वो पता होता है, बट लोग क्लाइंट साइड पे नहीं बताते हैं कि आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस वीक है. बट
जब क्लाइंट उसको टेस्टिंग में डालता है, देन ये ऑप्टिमाइजेशन की सारी प्रॉब्लम्स आते हैं और क्लाइंट फ्रस्ट्रेट होता है। तो स्टार्टिंग से आपको उतने ही स्टेट बनाने हैं जितनी स्टेट की रिक्वायरमेंट है। हमने एक स्टेट बना के हमने सारे इनपुट्स को हैंडल कर लिया। और बहुत लोगों को देखोगे तो वो हर एक टेक्स्ट फील्ड के लिए अलग स्टेट बनाएगा, एंड वो तुम्हारे कोड की लाइंस को भी बढ़ा देगा, कंपाइलिंग में भी ज्यादा टाइम लगेगा, रन टाइम पे भी ज्यादा टाइम लगेगा। कोड रन टाइम होगा, रन टाइम पे भी एरर्स हैंडल नहीं होंगे सही तरीके से, एंड देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन इट। सो स्टेट बनाने के पहले देख लो कि कितना स्टेट बनाना है, अननेसेसरी स्टेट्स नहीं बनाते। सो आई एम गोइंग टू मेक another function here, handle change. And inside this handle change, because it is an arrow function which is introduced in ES6, ECMAScript 6. And now what we are going to do, we are going to yes, so I have to take this event inside the what it is called. This is a parameter, yes. So yes, and now I can just distract name and value from the event.target. So basically event.target is an object, so you can easily destruct their keys from that object. Does it make sense? तो समझ पा रहे हो ना क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? What is this? So event.target is an object, so you can get the name and value. So I'm going to set this name to corresponding value or respective value. So set shipping address, and I'm going to make a previous state as a callback. And yes, you have a previous state, and now you can take this previous state as in what? This is what? A spread operator. So जो पहले से तुम्हारी state में होगा वो इस previous state में copy हो जाएगा. So this previous state takes copied all the things which is inside your object, and now what you are going to do, you are going to change a name to what? This value. Okay, I think we have some issues here. Let me check what is the issue. Yes, okay, sorry. So I mistakenly what I have done, I have to call this object, and then yes, now it is done. Yes, everything is now fine. So just I'm going to console it out. So console.log and this shipping details, and yes, the shipping details. So we have the shipping details and this console. So let me check my browser. So this is my inspect, and yes, we have an empty object inside our address, email, landmark, mobile, name, and pin code. So let me just fill this form and check the behavior. Okay. Cannot read property of symbol.iterator, handle change. Okay. What is the problem? ठीक है. So const handle change. Okay. So just copy it. हो सकता है कुछ syntax में issue हो सकता है. So I'm going to change this to this, and then set shipping details should be this, and I think we are done with that. Yes, it is compiled successfully. Okay. Okay, give me a second. So yes, you have this image called and shipping details. Just open the console browser, and yes, we have a name. Yes, so inside the name variable, if you are writing some name, it is copied inside the name, and if you're going to copy others at the rate
test.com, then yes, you have inside the email variable, you have others@test.com. Inside address, yes, it is also working fine. Mobile number, it is also working fine. Landmark, yes. Pin code, yes. So ultimately, you have this data: address, email, landmark, mobile name, and pin code. You have all the data inside this object. So yes, you have already handled it, and yes, now it is good. So yes, so we have all the details inside the handle change, and now I'm going to make a reducer here. So shipping reducer, shipping what? Shipping reducer dot js. So inside the shipping reducer, what you are going to do, you are going to just सर वो स्पेलिंग take गलत टाइप this. हुआ है शिपिंग का. Okay, ये बड़ा जल्दी दिख जाता है तुम लोग को. ठीक है. So yes, we have this reducer. So I'm going to copy it, and now I have to import what actions. So here we have different actions. Where it is? Yes, shipping constants. So shipping details is started, and yes, import shipping details is started. Shipping details started. Shipping details started. So I'm going to remove it to success, and then what we have failure. So yes, export cons. So you have to, you have already exported it. I think it is ready. Yes. So this is imported from where? Where this constants, and then we have shipping constants. Okay. And let me fix it. Yes. So now I'm going to change it to shipping request started, then shipping request success, and then what? This failure condition. So here, when shipping detail started is dispatched from your action, and where is your action? Yes. So when it is dispatched from this, from here, type shipping details started, it updates your what? A reducer. So this is going to be called, and it returns a loading state should be true. So when it is dispatched from the action file, then your loading state is what? A true. Then you have the sufficient data which is coming from your API. Then your loading state should be what? False. And now I am going to change this data to shipping. Shipping what? Details. So it is what? Action.payload, and then shipping
details failure, which have the required error messages. So yes, it is already done, and now only thing which is remaining is store.js handling. और वहाँ पे So भी स्पेलिंग गलत है शिपिंग डिटेल्स में. okay, shipping details हो गया है ना. Okay, ठीक है ना भाई. हाँ. So अब store के अंदर what we can do, we can simply import what shipping details from, okay, sorry, reducers. Where is your reducer? Yes, and then shipping reducer. Okay, and what you have to do, you have to just pass it inside the combined reducer because it combines all the reducer into a single reducer. So yes, you have already done that, and now you have already all the things is ready here. So I think shipping reducer. Yes. Okay. So problem is what? Basically, the color is not matches with all the reducers. So the problem is what? You have to change this reducer name, shipping details, reducer, and now, yes, not it's done. So here inside the store file, I'm going to change it, and yes, now it works. Good. Oh, everything is okay here, and only thing is what you have to dispatch the action from the shipping details file. So you have to handle the handle submit. So okay, so in next lecture, what we are going to do, we are going to handle this details or form details with the required payload, and then we are going to modify our API as well. So what is the problem in API? I'm just going to give a little brief here. So I want yes. So user have multiple shipping details, right? Multiple shipping details. So you are going to store this data inside an array. That makes sense? Array as Yes, an sir. object. So you're going to store all the details inside an array. So what we have to modify, so when user hit API of shipping details, then we are going to get the user ID, and on the basis of that user ID, we are going to save this data inside a database. Save this data inside a DB. So yes, save this data. You have saved this data inside the database. So when I'm going to make another API. So the API is what? Please fetch the all shipping details of the particular user. So for this, you have to make another API which fetches all the details from the database on the basis of that user ID. So we can map this data here. समझ पा रहे हो ना कि अभी हमें पूरे डीबी के अंदर एक क्वेरी लगानी पड़ेगी और वही डिटेल्स हम फेच करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूजर आईडी व्हिच इज सेव्ड इनसाइड द डेटाबेस. Does it make sense? Yes, sir. Yes. So we are going to handle these two APIs tomorrow, and apart from that, we are going to start a payment gateway integration. So yes. So for
payment gateway integration, we are going to use Brainly. So just go through the Brainly documentation if you have some time before tomorrow lecture. So you can easily understand what is basically a Brainly and what is payment gateway, and how can you integrate this payment gateway into different languages. तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाना, देखना कि कौन कौन यूज कर रहा है, क्या इसकी प्रोसीजर होती है, कैसे पेमेंट आता है, पेमेंट्स कैसे जाता है. तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आना. इसका डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा गूगल पे. ब्रेनली डॉक्यूमेंटेशन सर्च करना एंड जस्ट गो थ्रू इट. ठीक है? Okay, sir. Okay, so yes guys, so आज we are going to end it, और tomorrow we are going to take attendance and all. Okay, so thank you. सर अपने पिछला मतलब लेक्चर में आपने अटेंडेंस नहीं डाला था सर. मेरे को अभी मतलब मेल आ गया था कि एब्सेंट था. अच्छा, तो तुम कल याद दिलाना. आई विल अपडेट इट. ओके सर. ओके, चलो बाय. बाय सर. Thank you, sir. Thank you, sir. गुड नाइट सर.